वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये एवरीडे ग्लैम मेकअप लुक। आई जस्ट रियली लव हाउ दिस मेकअप हैज टर्न्ड आउट एंड इफ यू वांट टू नो हाउ आई गेट दिस लुक, कीप वाचिंग। मैंने पहले ही मॉइस्चराइज़र लगा लिया था ताकि मेरे स्किन में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जो मॉइस्चराइज़र मैंने आज यूज़ किया था वो है ये चिया सीड मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द फेस शॉप। इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ मेकअप लुक, क्योंकि इसका जो जेल लाइक टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है स्किन को प्रेप करने में। एंड मैंने इसे लगाकर 10 मिनट छोड़ दिया था ताकि मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो अब हम करेंगे अपनी स्किन एक और स्टेप से प्रेप, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, वो है प्राइमर। बिकॉज प्राइमर हमें हेल्प करता है ना ही सिर्फ ऑयल कंट्रोल करने में बट ऑल्सो इन मिनिमाइजिंग पोर्स एज वेल। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ दो प्राइमर्स। पहला प्राइमर मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का, विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन मिनिमाइजिंग पोर्स एंड ऑल्सो इन ऑयल प्रोडक्शन। और सेकेंड प्राइमर मैं यूज़ करूँगी ये वाला, ये स्मैशबॉक्स का विटामिन ग्लो मिनी साइज प्राइमर है। ये हमें हेल्प करेगा वो ड्यूई ग्लोई लुक में जो आज हम करने वाले हैं। और उसी के साथ हम यूज़ करने वाले हैं मैक का स्ट्रोक क्रीम इन द शेड पिंक लाइट, आई थिंक या पिंक लाइट। और ये हमें हेल्प करेगा अपनी स्किन को ड्यूई और ग्लोई बनाने के लिए, जो कि आज के मेकअप लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने प्राइमर और स्ट्रोक क्रीम ले लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूंगी ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। अब हम बढ़ेंगे बेस मेकअप की तरफ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है फाउंडेशन और सेकंड कंसीलर। फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस फाउंडेशन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड and I'm going to use a very little amount because I don't enjoy wearing a foundation at all, but because it's a glam look so a little won't hurt, so why not। मैंने फाउंडेशन बस इतना सा लिया बिकॉज ये पूरा लगाते हैं कि नहीं देखते हैं। और अब जब ऐसा लग रहा है कि मुझे बॉक्स हो गया है तो मैं पैक का ये 254 ब्रश लेकर इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रिमेंबर टू ब्लेंड योर फाउंडेशन वेरी नाइसली। और अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेक्स नहीं आने चाहिए। आई थिंक इट हैज़ ब्लेंडेड रियली वेल एंड मेरे को और कवरेज नहीं चाहिए। और मैंने सोचा था शायद एक स्पंज यूज़ करूँ बट आई डोंट थिंक उसकी नीड है, सो इट्स गुड। फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। आई एम इन द शेड मीडियम पीच। दिस इज़ अ वेरी गुड कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट लाइक 2 to 3 drops maybe। I'm going to use a little bit of concealer around my mouth and the sides of my nose. A little bit on there. That's it. Now I'm going to blend my concealer with the Pan 073 brush. Just remember to blend everything very nicely. Now I'm using a Damn Beauty blender और इसका water अच्छे से soak कर लेंगे। और अब इसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर को एक बार और ब्लेंड करूंगी ताकि हमारा बेस बिल्कुल नेचुरल लगे। सो डू इट। अगर आपको थोड़ा कवरेज और चाहिए तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट आई लाइक टू गो विद अ वेरी 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 नेचुरल बेस। In fact, I would not have used the foundation. Now I'm quickly going to set my concealer with a banana powder. I'm using this palette from Wet n Wild. Let's set it. Just using a very little amount of powder because we are going for a very nice dewy look. And you can skip using a powder or compact on all over your face, but I'm going to do that because I'm super oily and it just makes me look like a grease ball. So I'm just going to use a very little amount of powder to set my whole face. And to set my face I'm going to use this Nykaa compact. It's a new launch from them and I've not used it, as you can see. इसका puff गिर गया, sorry। मैंने अभी तक इसकी प्लास्टिक भी नहीं रिमूव की है, सो यूज इट। आई डोंट नो ये कैसा है,
this time. I think मैंने lighter shade ले लिया है. आ भी रहा है. Now for blush, I'm going to use this blush from Wet n Wild. It's in the shade Mellow Wine, and the brush I'm using is the Wet n Wild flat foundation brush. I'm just going to apply it on the outer of my cheeks, on my nose, and now I'm going to blend it with a beauty blender. Now for contouring, I'm going to use this palette from Wet n Wild, and I'm using this brush from Wet n Wild. It's their blush brush. Just going to contour a very little. Just slightly going to contour it. Now to contour my nose, I'm using this Allure concealer brush. It's a very nice fluffy brush, and we'll just do the job contouring my nose. Now, because we are doing a glam look, why not use a bronzer? So I'm using this bronzer from Wet n Wild. It has a very tiny amount of sheen to it, so it looks very good. Now I'm just using a random brush. I don't want very harsh contour going onto my face, so I'm just doing it very lightly. And I'm also going to use some bronzer on my nose, so just using the same brush. और अब यूज़ करेंगे एक हाइलाइटर जो आज के लुक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं फिर से वेट n वाइल्ड का ही ब्रश यूज़ करने वाली हूँ. इट्स द नंबर P77 and I'm just taking very little amount of highlighter because tapping off the excess, and can you see it? Oh my god. Can you see that? And to blend my nose highlighting, I'm using Wet n Wild P75 brush. Just taking a very little amount of highlighter again, tapping on the excess and blending it. Now let's move on to eye makeup. सबसे पहले हम अपनी eyebrows करेंगे, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स. पहला है ये मोमोसो का आईब्रो पेंसिल, और सेकंड है एसेंस का आईब्रो मस्कारा. तो पहले मैं इस लाइनर से आउटलाइन बनाऊंगी, और उसके बाद इससे मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूँगी. Just going to make it very natural. I'm not going to overdo my eyebrows at all. Now I'm just going to use some eyebrow mascara. Just taking off the excess. I just don't want very dramatic eyebrows. I think I'm done. Now I'm going to shape them with this kind of brush. Now I'm going to highlight my brow bone with Wet n Wild brow highlighter. Just applying a very little amount of everything. This brush is from Vega. It's small smudging brush, which is perfectly fits into my brow bone. Now for the eyes, I'm going to do my go-to eye look, which is like a very soft pink eyes with a hint of shimmer. First of all, I'm going to use this kind of angular blending brush to apply eyeshadow on my
these areas. So, and for the eyeshadow I'm going to use this nice mauvey brown color. So I'm just taking this into my brush, taking off the excess. And now onto my crease area. Don't overdo it, just apply very little. Now I'm going to apply this particular shade all over my lids. So it's a very soft pink color. Just taking it. Brush. And so far I'm loving the eyes, and now I'm going to use a little bit darker shade than the previous one. Maybe something like this. Yeah, this will be perfect. I'm just using this particular shade, and I'm going to apply it only to my outer corner and a little bit in the middle. And now I'm going to take a very fluffy brush, something like this. It's a Miniso brush, and I'm going to blend everything on my eyes together very nicely so that it looks. And now for shimmer, I'm going to use this particular shade from this palette. This is Nicka K Sugar Plum palette. And to apply this shade, I'm going to use a flat brush. This is again from Miniso. Ooh, that's great. Ooh, that's it. I'm just loving the eyes. Now I'm going to take the same brush and take that same deeper color and just apply it on my lower line. Now I'm taking this Color Bar smudging brush and applying the same highlighter into my inner eyes. Now I'm taking this nude eyeliner from Wet n Wild and I'm applying it on my waterline. And now I'm taking a kajal and I'm going to tightline my upper line. Now for eyeliner, I'm going to use this brown color from Nicka K palette. It's the Undersea palette. Just taking an angular brush. Oops. You can also use a brown liner. Now I'm going to apply mascara, but before that I'm going to curl my lashes. And just be very careful while you do it. I'm not going to put any falsies and all because I don't need any. I mean, I do need it, but I just don't want to. I think I'm going to use one more mascara, which is from Maybelline, because it's a glam look and I'm not using any falsies, so why not give them a bit more volume. Just look at that difference. Actually, I really enjoy using these two mascaras together because Essence One's really help in giving volume and Maybelline is so good at giving curls and length to your lashes. Now the makeup look is almost done. We are just left with our lipstick. For this look, you can go with any lipstick of your choice, like red, nude, brown, anything you want, pinks, corals, anything you like. I'm going to wear Meher from MAC, but before that I'm going to line my lips with a lip liner which is a bit darker than this lipstick. So I'm using this lip liner from Studio West. It's in the shade Rose. I just love the color.
I'm done with lining my lips. Now I'm going to use this Meher from MAC. And this is my go-to glam look. I hope you really enjoyed it. And wait, we have forgotten one thing, which is a setting spray. So let's do it. I'm using the Flower Beauty Seal the Deal Long Lasting Setting Spray in the matte finish. You can use any setting spray of your choice. I'm just going to spray some of it because I want that glow to be there. So I'm just going to spray a very little amount. And just to set my setting spray, I'm using this compact from Lakme, and I'm using this Kabuki brush from Colorbar. I'm just using a very little amount. I'm just setting my setting spray. Of course, you don't need to do this step, but because I am a grease ball, I need to do it. And that's it. We are done with this look. I really hope you enjoyed it, and if you do, don't forget to subscribe to my channel, like this video and share it with